एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ग्लिटर्स ऑफ लाइफ पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट रोहित कोकने। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, बट हम कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। एंड टू टॉक अबाउट दैट वेरी टॉपिक वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, अदिति दहिया, who is the mindset and wellness coach and a content creator as well. You might have seen her content on Instagram, a lot of it. So welcome Aditi on the show. Thank you so much, Rohit. How are you? I'm doing great. How about you? I am also doing great, having a very work-oriented Sunday today. ग्रेट। तो ये बोलना पड़ता है क्योंकि जो कैटेगरी को आप केटर कर रहे हो, सेल्फ हेल्प, सो इट्स वेरी Hmm. इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ डिड दिस ट्रांजिशन केम इनटू योर लाइफ की, मतलब एक क्या एलिमेंट था कि हाँ इस कैटेगरी को, इस नीश को केटर करना है। व्हाट ड्रीव यू टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? यार इसका जवाब I think it's a very long way till this particular category, वुड लव टू नो। actually. So I have been like I did not know self-help was a thing when I was interested in self-help. Okay. So this was like when I was in college, and at that point in time I had started practicing yoga and spiritual, like got into spirituality because my mom's into that. ओके। And that is when this journey started of, personal development in that sense, where you use philosophy and spirituality and lessons from books, etc., to understand what is going on inside of you. And that is when the interest in this topic started. And then of course, like that was 2010, 2011. So अरे it's बाप been रे। like it's been a part of my life for the longest time. या। But in terms of creating content on it, before 2020 is when I started creating personal development content, by the way. उससे पहले ना क्या था कि you get that shiny object syndrome, no? So I've always wanted to create content. Even in college, I was like, this is what I want to do. By the way, college mein, my bachelor's is in psychology. So that is ओके। also, या। yeah, like a या। thing that I think हाँ, drove to कनेक्टिंग this फैक्टर हो finally. Yeah, सकता है। yeah. But when I was doing psychology, I wanted to do mass communication. So in my post graduation, I ended up doing mass comm, and wahan se I got into the content creation space, like journalism first, then content creation. And at that point in time, everyone was doing like fashion content and travel content, or there was a lot of food thing going on. राइट। And you, like when you're young and when you're naive, you look at something and you think, oh, this is something that I can also do, right? मैंने भी किया था ये। So मैंने जो है फैशन कंटेंट बनाने का ट्राई किया, फिर मैंने ट्रैवल कंटेंट बनाने का ट्राई किया, एंड बोथ ऑफ दोस टाइम्स आई रियलाइज कि इट इज जस्ट लाइक आई एम नॉट दिस पर्सन. एक तो like all kinds of content creation is a lot of work, but if it aligns with what you believe in and what you do inherently, it's a little bit easier. या। बट फैशन और ट्रैवल के साथ तो वो नहीं हो रहा था, मतलब it was so tedious to like do outfit changes and like shoot those and make videos on those. Oh my god. And then I was working with a travel company, which is why I ended up creating a lot of travel content. It was fun for a little while. Like it was I was primarily a writer. So writing travel content was fun because you write it after you've traveled. हाँ। But with the kind of travel content that you see on Instagram and YouTube nowadays, वो ऐसा है ना कि आप करते करते ट्रैवल करते करते ही बना रहे हो, तो इतनी, मतलब इट जस्ट टेक्स द जॉय आउट ऑफ ट्रैवलिंग फॉर मी. तो वहां पे मेरे को समझ आ गया कि ये दोनों चीजें तो नहीं नहीं करनी. करनी है। And till 2019 I was doing like a full time job thing, and then I was like कि नहीं, बस बहुत हो गया, फुल टाइम जॉब भी नहीं करनी. अरे बाप रे। तो 2019 के एंड में, एकदम एंड में यार, मैंने ऐसे छोड़ा, ठीक है. एंड किसको पता था कि 2020 में से लॉकडाउन ही लग जाएगा, लॉक। पूरा साल लॉकडाउन में निकल जाएगा. तो 2020 rolls about, lockdown happens, I don't have a job, I'm just doing like random freelance gigs. एंड फिर सडनली ऐसे सब कुछ सन्नाटा वनाटा हो गया. तब ऐसे आई वाज लाइक कि क्या करोगे. तब भी ऑल्सो लाइक नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 के बिगिनिंग में आई वाज डूइंग लाइक सेल्फ पोर्ट्रेट्स थिंग बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू लाइक आर्ट एंड फोटोग्राफी एंड jazz like that. फिर धीरे धीरे आई थिंक दैट जस्ट ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली हैपेंड बिकॉज आई वाज इन दैट जोन वेयर आई वाज थिंकिंग अबाउट putting my life on track and starting to implement a routine and like have a healthy lifestyle and all of that, and that just very naturally transitioned into my content.
and that content ended up resonating with a lot of people. Yeah. तो वहां से मुझे लगा कि हाँ, like nice space to create content in as well. बढ़िया यार, मतलब सब कुछ ट्राई करो और सब कुछ फिर ट्राई करो, कहीं तो हाँ. नहीं I work by the process of elimination कि ओके। करो सब कुछ, and then whatever is not working, अच्छा, you now know for sure that this is not working, so you'll never like question yourself in the future कि अरे वो ट्राई कर लेती, क्या पता चल जाता. वो वैसे ही होता है बिकॉज एज आई सेड, मतलब कि मेरा फील्ड तो बिजनेस में है, फिनेंस हम्म. टैक्सेशन देख रहा हूँ। आई हम्म. स्टार्टेड विद माय यूट्यूब चैनल इनटू द टेक थिंग। तब मतलब कुछ ओह नाइस. रिसोर्सेस ही नहीं थे, मतलब तो वो हाँ. क्विट कर दिया। हम्म. अनबॉक्सिंग करना वगैरह, यार वो हम्म. प्रोडक्ट्स लाऊं कहाँ से? ट्रू. बिकॉज कैसे करते हैं वैसे टेक? मेरे को जानना है कि टेक वाले क्रिएटर्स, क्योंकि जो शुरू में बहुत स्टार्ट कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है ना सबके पास पैसे होगा. नहीं, हाउ सबके आर पास दीज नहीं होता है। पीपल, इट्स हाउ मोर आर दे डूइंग अबाउट, इट? हाँ, इट्स मोर अबाउट कि कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव आउट द टेक न्यूज़ एंड देन पीपल स्टार्ट बिल्डिंग, देन यू गेट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स। अभी मेरे को कैसे हुआ था तब, हमारे यहाँ पे जो सैमसंग शॉप है, वहाँ से बुला लेते थे कि आओ आप यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लो, तो उनका ही ओह कैपिटल, ओके. उनके ही प्रोडक्ट्स। बट ओके देन नाइस. दैट कुडंट रेजोनेट वेल। आई हैव द हम्म. फैसिनेशन फॉर द गैजेट्स, बट देन वो हम्म. कहते हैं ना कंटेंट में आना, नहीं आ रहा था. तो वो नहीं बैठ रहा था। फिर देन हम्म. आई रियलाइज कि चलो गैप लेते हैं, एंड फिर वो कीड़ा तो था ही, हम्म. इंटरनेट पे कुछ करना है। सो दिस फाउंड लाइक हम्म. एक्साइटिंग यार, यहाँ पे तो लुक्स की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, यू डोंट हैव टू वेयर फैंसी ड्रेस एक्सेट्रा, हाँ. मेकअप नहीं करना, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो हाँ. दैट वाज समथिंग, देन आई रियलाइज कि यार ये पजामा पॉडकास्टर कंसेप्ट काफी अच्छी है, तो करते हैं इसको, एंड दैट इज हाउ पॉडकास्टिंग हैपेंड फॉर मी, एंड आई एम नाउ एंजॉयिंग द प्रोसेस एज यू सेड कि जो हम्म. आपको पसंद आ रहा है वो करते रहना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट रेजोनेटेड विद मी। वो कर भी आप वही पाते हो जो आपको पसंद है. हाँ, लाइक यू कैन ओनली सस्टेन इन समथिंग दैट यू एंजॉय ना, वरना तो वो करके छोड़ देते हो, ऐसे कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं होता लाइफ के ऊपर. राइट, वही होता है। ट्रू. या हम्म. सो वैसे ही था। और फिर देखो दितिन, व्हाट आई फील इज दैट कि इसको जो भी करना है, सो वी ऑलवेज फोकस ऑन द काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ग्रोथ। तो यहाँ पे जो भी आपका माइंड सेट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं माइंड पे, या फिर एनी वे इट अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन। तो हाउ डू यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर लाइफ? मतलब कि क्या एक फिलोसफी है तुम्हारी कि अगर वेलनेस है, सेल्फ ग्रोथ है, साइकोलॉजी है, एंड एवरीथिंग दैट यू केटर टू एज अ नीश और एज योर कंटेंट पिलर, तो वहाँ पे क्या साइकोलॉजी होती है, तुम्हारी फिलोसॉफी होती है? मेरी खुद की लाइफ की कि मेरे या कंटेंट की? तुम्हारी कंटेंट या तुम्हारी दोनों, मतलब कि वो अलाइन होती होगी कहीं ना कहीं। हाँ, अलाइन यार, एक मतलब आई वुडंट से देयर इज लाइक अ सिंगल फिलॉसफी. ऐसा तो नहीं है कि एक ही फिलॉसफी पे जीवन नहीं हो चल सकता रहा है, है. हाँ, नहीं बिल्कुल हो नहीं होगा। सकता. बट my this thing has always leaned towards detachment and balance. Detachment from the outcome of whatever is happening basically. तो जैसे वो अकबर बीरबल वाला कॉन्वर्जेशन है ना, कि अकबर बीरबल से बोलता है ऐसा एक लाइन बताओ कि जो कोई खुशी में सुने तो दुखी हो हाँ, जाए, और दुख में सुने तो खुश हो जाए. एंड द लाइन दैट बीरबल सेज इज, ये वक्त बीत बीत जाएगा. जाएगा। So that is something that I constantly remind myself of. Like that is something that I live life by, in the sense कि हाँ, मतलब अच्छा भी कुछ बहुत हो रहा है, या अभी कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, फिर जीवन बिल्कुल ट्रैक ऑफ ट्रैक चल रहा है, या तो वो चीज पे हमेशा फोकस रहता है, लाइक इन माई पर्सनल लाइफ. एंड आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट दिस इन माई कॉन्टेंट, बट why I rely a lot on this particular way of thinking or this particular philosophy is that it helps you stay in action mode without getting very attached to the results. या या And that just, I think that keeps you happy or content overall. Like happy wouldn't be the right word. जैसे contentment रहता है जीवन में ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है, अभी नहीं चल रहा, ठीक तो हो जाएगा, या अभी बहुत अच्छा चल रहा है तो काम डाउन आदिति, you never know कि यू आगे क्या नेवर नो। होगा. That kind of thing. So that is one personal philosophy. And in terms of content, yes, like in terms of the result of the content, this will apply. But in terms of creating content, uh, a lot of it stems from wanting to help people understand what their true potential is, like where they can go to. And I think I started doing it, like I've never really pinpointed one factor. Like, and I think I started doing it because I've seen a lot of people in my personal life uh, stay stuck because of their mindset, ओके। because of not knowing how to get out of the
mental fortitude that they are in. तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि like if I meet somebody, I know what they're going through and I don't want them to go through it. If I can help in some way, then like राइट। that is where my content का philosophy comes in. नहीं, सही बात है एंड एज़ यू सेड कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाइक हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड, क्योंकि वो अगर अलाइन नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ वे यू आर प्रोग्रेसिंग, देन सारी चीज़ें फिर से अलाइन करो, उसको रीअलाइन करो, व्हाट इज़ लेफ्ट विद इट, यू हैव टू सी ऑल ऑफ इट। बट डज़ इट गेट ओवरवेलमिंग फॉर यू? No, इंटरेस्टिंग। it doesn't. Uh, Surprisingly, it doesn't get overwhelming for me. The content creation aspect of things, which is like अच्छा वीडियो एडिट करना है, oh my god इतने सारा एक ऐसे बकेट बना के रखना है, वो सारा काम might sometimes get overwhelming, but the field in itself I don't think it has so far. बढ़िया है, ये सीखने लायक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर मोस्ट ऑफ देम इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग, यार ये करना है, ये रह गया, वो भी करना है, फिर देन खुद की लाइफ को भी संभालना है एंड ड्यूरिंग ऑल दिस केओस, मतलब कहते हैं ना कि किसके लिए कर रहे हैं, इज इट फॉर द ऑडियंस, इज इट फॉर योरसेल्फ और लाइक फॉर whom? तो वो एक बिग क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता Big है कि question लाइक mark. या हाँ. वो सारी चीजें हैं। आई थिंक दोनों के लिए ही करेगा, मतलब कोई भी बना रहा है, हाँ। कोई भी इस स्पेस में अगर बना रहा है, मतलब फॉर देम आई या थिंक इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम अपने लिए तो कर ही रहे हो ना, हाँ। मतलब व्हाई विल यू डू समथिंग व्हिच इज नॉट बेनिफिटिंग यू इन एनी वे राइट। शेप और फॉर्म। या अपने तो तुम कर ही रहे हो, बट वो सस्टेन नहीं हो सकता जब तक जो देखने वाला है, सुनने वाला है, उसका भी फायदा नहीं हो रहा उस चीज के राइट। अंदर। और वो पर्सपेक्टिव भी अलाइन होना चाहिए, मतलब कि इफ योर पर्सपेक्टिव इज लाइक समथिंग डिफरेंट दैन दी ऑफ अ पर्सन हु इज वाचिंग इट, तो फिर वो वहाँ पे मतलब कि एक आ सकता है ओपिनियन, बट यू जस्ट हैव टू बी वेरी कैजुअल विद द अप्रोच दैट वट एवर वे यू विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, कि वो कहते हैं ना कि क्लैशेस नहीं होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि क्रिटिसिजम्स वगैरह ये तो काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है इंटरनेट पे, तो वो एक संभालना पड़ता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग कि हमने देखा है कि सेल्फ हेल्प अगर जब बात होती है इंटरनेट पे, तो पीपल ऑलवेज फील बुलशिट अबाउट इट कि यार ये क्रैप है, मतलब ऐसे कौन सी भी बुक पढ़ लो या फिर उससे फायदा नहीं होता, इट इज मोर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इट हैज ऑलवेज बिन लाइक अक्यूज्ड कि जो भी आपके इनसिक्योरिटीज है, फियर्स को कैपिटलाइज किया जाता है। तो do you receive such kind of criticisms or anything you have heard about it into the industry, and what will be इंडस्ट्री your में way? तो यस, लाइक आई एम अवेयर ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट द सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री receives, and some of it I would agree is right. Personally in my content, so far it's been good, easy going. सही है। वो ऐसे जब थोड़ा सा ज्यादा कहीं पहुंचेगा लोगों के पास, तब तब होएगा वो ड्रामा, बट डीएम्स आ जाते हैं कभी कभी इससे रिलेटेड। लेकिन द क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ इट ना, मैं समझ सकती हूँ व्हाई पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग इट आर क्रिटिसाइजिंग इट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हाँ। इन लाइफ ना, एक तो होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, राइट। ठीक है, एक होते हैं जो थिंकिंग ओरिएंटेड होते हैं, जो मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग की जोन में चले जाएंगे, ठीक है, वो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं बट एक्ट उस पे नहीं कर रहे हैं, राइट। सो आई अग्री कि सेल्फ हेल्प का जो पर्पस है वो है आपको सिखाना कि आप एक्शन कैसे ले सकते हो, कि आप कार्य कैसे कर सकते हो। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु क्रिटिसाइज इट, दे आर प्रोबब्ली ऑलरेडी लाइक एक्शन टेकर्स, हाँ। तो उनको वो इसलिए रेजोनेट नहीं करता, उन्हें लगता है कि हम मतलब दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोस पीपल टू कम बैक टू समथिंग, सम एडवाइस दैट दे कांट इम्प्लीमेंट और दे आर प्रोबब्ली ऑलरेडी डूइंग। या लेकिन and also for action, like because I am a very action oriented person, ओके, ठीक है, गुड टू नो। तो जब मैं किसी को देखती हूँ जो कि बात तो बहुत कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा उस पे कुछ भी, ठीक है, तो earlier I used to get irritated also with this fact कि यार मतलब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, बोल भी तुम बहुत कुछ रहे हो, लेकिन तुम उस पे काम तो कर नहीं रहे। और अगर क्योंकि जैसे मेरा दिमाग चलता है ऐसे पॉइंट वाइज लॉजिकल, व्हिच इज व्हाई लाइक ओके। माय कंटेंट इज आल्सो लाइक दिस, राइट। सो इट्स लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आई एम लाइक कि ये करो ये करो ये करो और यू विल रीच वेयरएवर यू आर वांटिंग टू रीच, बट आई रियलाइज दैट a lot of the times just thinking about doing something is also satisfaction enough for a lot of people, which is where I एब्सोल्युटली। think self help
fails, which is where I think people need help from coaches, from therapists, to push you over the line where you're stuck in the rut of thinking. But हाँ, criticism मैं समझ सकती हूँ, because as somebody who likes to think or likes to take action, ऐसे एकदम straightforward, okay, it can get irritating to see people just stuck in like a thinking zone. हाँ, वो हो जाता है एंड आई हैव सीन योर कंटेंट, मतलब कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट डूइंग समथिंग एंड जस्ट स्पीकिंग आउट देयर थ्रू योर माइंड, तो वो एक काफ़ी नेचुरल फीलिंग आती है, दैट इज वेयर पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, बिकॉज True. देन it's your personality, it's your style, and that is how people start resonating with your content, your advices, whatever you give, because then वो सारी चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है. वी हैव दिस लॉट ऑफ कोचेस. जैसे ही हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं कि ऐसा आज कोई सेक्टर नहीं है कि उसमें कोच जिसमें नहीं है, कोच नहीं है. एक्सपर्ट नहीं है. बट दैट इज फाइन, लाइक वी आर मेकिंग द प्रोसेस सिंपलर फॉर द पीपल हु वांट, हु आर विलिंग टू सीक हेल्प, कोई भी कैटेगरी में हो. बट वो रियलाइजेशन जल्दी आता नहीं है लोगों को. वो कहते हैं ना कि यार ये डेढ़ शाना है, ऐसे टाइप्स की फीलिंग लेके आती है. जब तक आप किसी के साथ नहीं काम कर लेते ना, तब तक नहीं रियलाइज होता है. मतलब दूर से देखने पे, बिकॉज वी लिव सैडली इन अ very extremely capitalistic world, although I am pro capitalism, like I'm not Okay. anti capitalism, because I don't think we found or discovered a better way to run the world, honestly. Like there could be checks and balances in place, but I don't think we have reached a stage where socialism or communism can sustain society. Right. But एक्सट्रीम कैपिटलिज्म के चलते वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो उठ चुका है लोगों का. लाइक यू मेंशन ना कि तुम्हारे इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे फियर्स पे कैपिटलाइज कर रहा है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री. एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगती है इस क्रिटिसिज्म के साथ, हाँ, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ अ टैंजेंट हियर, हाँ बिल्कुल. इट इज a lot of people don't realize how much of a privilege it is to be able to seek help. Yeah. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में तो डॉक्टर, लाइक फॉर अ फिजिकल डॉक्टर टू बी एबल टू गो टू अ फिजिकल डॉक्टर इज अ मैसिव प्रिविलेज. ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्री में और बाकी किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे हेल्थ केयर इतना एक्सपेंसिव है, आप फिजिकल हेल्थ के लिए तो पहुंच ही नहीं पा रहे ना डॉक्टर के पास. मेंटल हेल्थ तो आप छोड़ ही दो. तो उस स्पेस में, and I have seen this happen with people, I've seen it happen with myself also, because self-help is my first, like my teacher in the space of discovering who you are as a person, right? Before I even understood that I could, probably go to a life coach or probably go to a therapist and seek help in that way. This is where my knowledge or my ज्ञान came from. ऐसी जगहों पे जहाँ पे एक्सेस है ही नहीं, वहां पे बहुत महत्व है सेल्फ हेल्प जैसी चीजों का. वो अलग बात है कि डिपेंड करता है कि मतलब कौन किस तरीके से उसको एक्सेस कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है. बट किताब सबसे सस्ती चीज होगी दुनिया में जो कोई ले पाएगा. राइट. राइट, सो लाइक विच इज वाई, लाइक अब तक भी अगर तुम वैसे हम अपने स्क्रिप्चर्स को ही देख लो, लाइक एवरीथिंग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बुक, राइट? बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट methods to impart knowledge, impart education from somebody who wants to do it, of course. मतलब जो करना चाहता है वही ले सकता है. But one criticism, like this is where I think self-help quashes all of the criticisms that come, because it gives a level playing field. At least two people who know how to read and write. Yeah. वो ज़रूरी है, मतलब समझना चाहिए हमें क्या ज़रूरी है. सी राइट नाउ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मीडियम, सो पीपल कैन रीड अ बुक, पीपल कैन वॉच वीडियोस या पॉडकास्ट सुन सकते हैं. बट देन अगेन व्हाट मीडियम सूट्स यू, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट पर्टिकुलर मीडियम, क्योंकि हर एक इंसान का एक डील करने का प्रॉब्लम के साथ क्रिटिसिज्म अलग अलग है. सो उसको हम एक वन साइज फिट अप्रोच से नहीं देख सकते. एंड अगेन इफ दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट कि हमेशा कुछ एक साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो जो वीडियोस में दिखाया जाता है या फिर इंडस्ट्री में लिखा जाता है कि 10 चीजें ऐसी जो आपकी जिंदगी बदल देगी, डू दिस डू दैट, तो वो काफी ओवर सिंप्लीफाई करके दिखाया जाता है. दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. वो कॉम्प्लेक्स है, वो उसकी समझ भी नहीं है. सी लाइक यू हैव टेकन योर बैचलर्स डिग्री इनटू इट, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स ऑफ इट. बट जिसका कुछ बैकग्राउंड नहीं, बस वो चीजें बता रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट और समथिंग लाइक दैट, तो काफी मुश्किल हो जाता है. सो दीज आर द क्रिटिक्स आउट देयर. तो
उसको कैसे डील कर सकते हैं? बिकॉज़ देन इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट द वीडियो कि लाइक हाउ टू गेट आउट ऑफ अ डिप्रेशन, तो उसका एक कुछ फिक्स अप्रोच नहीं है। सो There's no ड्यूरिंग fix. दैट हाँ, True. तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट कि जो भी आपका कंटेंट जाता है दैट विल Yeah, रेजोनेट विद so resonate with all people तो possibly नहीं है, नहीं, नहीं, but दैट इज़ फाइन। in terms of uh, informing people, what I keep doing from time to time is reminding my audience कि भाई तुम कुछ भी देख रहे हो ना इंटरनेट पे, like anything that you see, it is half truth. So especially if you're looking at educational content on the internet, before you start implementing something, do your research. Go, like if you can watch a video which is being spoken in English, तो तुम्हें इतनी तो मतलब नॉलेज है, इतनी तो हाँ, एजुकेशन है कि होनी तुम ही गूगल कर चाहिए। सकते हो, राइट? या तो बिफोर यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर यूर वॉचिंग ऑनलाइन, वेदर इट्स यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स, वट एवर, उसको पहले रिसर्च कर लो। 3 सोर्सेज से तुमको कोरोबोरेट कर लो उस फैक्ट को, इंक्लूडिंग लाइक माई कॉन्टेंट। मैं तो अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ ना। राइट। और if it fits into what you're going through right now, then you start implementing it. Like because there's no one size fits all recipe anywhere. सही बात है। एक बड़ा तो ऐसा ना, मतलब बड़ा स्टूपिड एग्जांपल है ये, बट अभी रिसेंटली ऐसे रील्स पे कुछ मैं देख रही थी, वो ऐसे क्लीनिंग हैक्स नहीं बताते रहते लोग, हाँ, है ना? या मुझे बहुत फन आता है उनको देखने में। एएसएमआर टाइप है क्या? नहीं ऐसा बार नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग हैक्स, बिकॉज आई ओके, वांट टू नो कि हाउ टू कीप माय होम लाइक अच्छा। क्लीन, फ्रेश एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक ना हैक जो बहुत लोग बताते हैं, वो आई एम टॉकिंग अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन हियर, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। तो one hack that a lot of people say, like if you want to clean your shower head, or like if you want to clean like taps के अंदर जो calcification हो जाता है, so you put vinegar and baking soda in like a plastic bag and you tie it on the shower, like it's dipped inside and it removes the calcification, ठीक है? अब I was a very nerdy science kid growing up, okay? And my first question always used to be कि भाई अगर तुम विनेगर और बेकिंग सोडा मिला दोगे तो सॉल्ट वाटर बन गया। Like the chemical reaction रिएक्शन। turns it into salt and water, right? How is it effective? How? अच्छा, उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी। Huh. So then I went online and I googled. So it is not like the people who are giving these hacks, they probably used it, and the reason why it mildly works is because तुमने soak करके रख दिया ना पानी में किसी चीज को, तो चलो थोड़ा बहुत सफाई होगी। But it would be a lot more effective if people were just either using vinegar or baking बेकिंग soda सोडा in water. या I was like कि ठीक है चलो, ऐसे मेरी तसल्ली हो गई कि हाँ मैंने रिसर्च किया, it was wrong information and now I'm doing the correct. उससे भी Yeah. लोगों ने कमा लिया होगा। हाँ, कमाने की भी बात नहीं है, लाइक लाइक आई थिंक द पीपल आल्सो हु आर टेलिंग दैट इन्फॉर्मेशन, उनको जेन्युइनली लगता होगा कि वो सही है, बिकॉज जो देखे मैंने लोग, आई एम नॉट लुकिंग एट लाइक वो ऐसे 5 मिनट हाँ, क्राफ्ट हाँ, वाले वीडियोस, दीज आर एक्चुअल पीपल हु यूज्ड दिस व्हाटएवर यूजलेस। टूल इन देयर हाउस, एंड उनको लग रहा है कि ये काम कर रहा है। बट हाँ, लाइक मिस इन्फॉर्मेशन डज नॉट नेसेसरली ऑलवेज मीन कि कोई एआई वाला ही कंटेंट, जैसे अब तो वो भी बहुत चल गया यार कि लोग चैट जीपीटी स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसको ऐसे वो वीडियो टेक्स्ट वीडियो मेकर में डाल के और वीडियो बना देते हैं। Oh God. हाँ, but misinformation can also be like you're living the misinformation. That's also a possibility, right? अगर जैसे हमारे बड़े लोग हमको ज्ञान देते थे, it comes from a place where they want to help you, but probably the tools that they're using for themselves are not the best ones out there, which is राइट। why like research is important. People can come and give you ज्ञान from experience also. Whether that applies to you or not is uh, subject to your life, which is why it's very मैंने important जिंदगी to do your ज्यादा जी research. है। हाँ यार, पता है मेरे को अब रियलाइज हो रहा है वैसे ही है कि it is true, right? Like a lot of things in life you realize only with age. How old are you? I'm sorry. Like if you are आई एम comfortable 32। to, yeah. So like the way that I'm 31, okay, the way that I used to think at 20 is very different सच from में, सच में। what I think now. So I understand when like my dada dadi now say कि हाँ हमारे पास तुमसे ज्यादा experience है. I was like ठीक नहीं, है. रिलेटेबल है, बट फिर भी आई डोंट प्रेफर टू गिव दैट काइंड ऑफ अ ज्ञान, मतलब कि एज हिसाब से मेरे को नहीं आता है, मतलब कि चलो हम हमारा यूटिलाइज कर रहे हैं एक्सपीरियंस, वी आर फोकसिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज पीपल डोंट रेजोनेट, पीपल डोंट से गुड अबाउट इट,
जो सपोर्ट करते हैं हम्म उनके तरफ से तो आते ही रहता है, वो पता रहता है हम्म हमें, बट हम्म अदरवाइज जो रैंडमली जाता है ना, so it gets difficult to handle that particular kind of a thing. But again, we grow with as a person, as हम्म we see, as we experience, तो वो चलते रहता है, and whatever we are doing we have to do best. बाकी तो कुछ एजेंडा होता ट्रू नहीं है. ट्रू बेस्ट करने की सोचते हैं, बट कभी कभी फेलियर्स भी आ जाते हैं अदिति. सो वर देयर एनी काइंड ऑफ फेलियर्स इन टू योर लाइफ, और फिर लगा कि नहीं अब हाँ सेल्फ मतलब ये हेल्प. ऑब्वियसली यार सेल्फ मतलब वैसे विदाउट फेलियर किसकी लाइफ है ये चलो बताओ सुनते पहले हैं कहानी शुरू, मुझे ट्रेलर. No, like what kind of failure are Anything you it could be. referring I am to? not referring to any kind of a professional I person. actually didn't let you finish your question only. Like, where was the question leading? Which is like failure and आगे. हाँ मतलब फेलियर जो आया, एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि नहीं सेल्फ हेल्प ही मेरी अब जिंदगी सुधार सकता है, काइंड ऑफ अ फीलिंग कि नहीं अब जोश खुद को ही करना है कुछ भी. यार ये तो मेरा हमेशा से ही है. Like this was not it's not a thought process that started after getting into the space of self-help. Like getting into self-help was a function of how I am as a person. It's हम्म. like सेम how फॉर I मी. am as a person is not a function of getting into self-help. So it's like the other way around. तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई फेलियर और अब मुझे लगा ओ माय गॉड अब सेल्फ हेल्प ही सुधार सकते हैं बिकॉज हाँ आई थिंक ये वाला लोग बहुत लोग सोचते हैं ऐसा विच इज वाई लाइक अ लॉट ऑफ टूल्स आउट देयर माइट नॉट सीम एज हेल्पफुल बिकॉज अगर तुम इस मेंटालिटी से जा रहे हो किसी प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम है और तुम इस सोच से जा रहे हो कि यही चीज मेरी जिंदगी सुधार सकती है बिकॉज it doesn't work like that, no, like life doesn't work like that. You think that this will work, हाँ. you implement it, but in 99% of the cases that's not exactly how it works. There's या. a permutation combination to it, and some other permutation combination from what you thought earlier actually ends up working and giving you the lesson or giving you that aspect of growth, etc. So like I don't think there has been one instance for this where or like a failure wala instance which made me realize ki, oh my god, self. Yeah, actually my family is also like my mom has been into spirituality, personal growth from when she was in her 20s types. No, ओके. so we've actually grown up with that in our house, like though what she taught us, the kind of books that we read as kids, all of that I think is culminated into like the present version of this person. So aisa there's no one. I'm trying to actually think, but हाँ there is सोचो no सोचो, one वन one नहीं, 5 4 2 3. no, like failures I can talk about. Failures तो मल्टीपल लाइक जिसे मैंने फैशन कंटेंट स्टार्ट किया वो नहीं बना, बात ही नहीं बनी इतनी, मतलब मैंने तो बहुत टाइम लगाया था यार. एंड देन आई वाज लाइक कि सब ऐसे कैसे बना लेते हैं, कॉलेज के नहीं कर लड़कों ने पा पुश रहे नहीं हैं. किया क्या? आई वाज इन अ गर्ल्स कॉलेज, अच्छा. तो किसी किसी लड़के ने कोई पुश नहीं किया, तो आई वाज हाँ तब वो फेल हो गया. फिर मैं ट्रैवल कंटेंट बनाया, चलो वो फेल हो गया. ये तो कंटेंट की डोमेन वाली चीजें हैं. बाकी क्या, हाँ मतलब एक पर्सपेक्टिव वाली बात भी है, जैसे फेलियर को फेलियर नहीं, अभी रियलाइज करी हूँ मैं ये चीज मैं सोच रहा हूँ while कि talking. टेल मी विदाउट फिल्टर्स. No, no, I'm नहीं नहीं not वैसे कुछ putting नहीं a बस. filter on this. It's just I don't think I look at failures as like वो कहते हैं ना कि and बहुत ही क्लीशे एडवाइस है ये, कि failure is an opportunity for growth, but it is true because right now I'm actually trying very hard to remember where I can tell you like an interesting story फिर of से a आते लगे. failure that has happened, but every time that something like that has happened it has actually resulted in something much better. दिल So टूटा it's the वगैरह से कुछ होगा तो. दिल टूटा वाला तो नहीं है. चलो. हाँ, दिल टूटने वाली स्टोरी तो क्या वो हाँ फेलियर में ही आती है ऐसे वो, हम्म. बट है नहीं. हम्म हम्म. नहीं मतलब आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर ऑडियंस बट को क्लैरिफिकेशन मिल गया. या तो हम्म ठीक है चलो स्किप. most of what I would consider
failure would also be in a professional, like I'm a very career oriented person, extremely. तो कुछ भी ऐसा फेलियर वाला है भी तो भी वो मतलब मैं हमेशा अगर बात करी होती है ना उसमें तो वो फ्लो में वही निकलता है, काम वाली चीज निकलती है. But I again, like I said, it's always turned out to be something like if I didn't create fashion content, that actually led me to Travel Wala, this company that I was working for. And my God, the 2 years that I spent at that company were an absolute ball. Like the places that I traveled to, the kind of people that I ended up meeting, and oh, articles wala likhna, all of the office people that I met, it was beautiful. beautiful. फिर वो इवेंचुअली लाइक व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ ये क्योंकि अपने पर्सनल कंटेंट में तो वो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा था ना, तो देन आई डिसाइड कि हाँ ये नहीं करना है. तो ठीक है. हाँ फिर वो भी मतलब एक पॉइंट. ओ सो देन आफ्टर आई क्विट माय जॉब एट दिस ट्रैवल कंपनी, आई डिसाइड कि आई विल स्टार्ट अ ज्वेलरी ब्रांड. ये तो नया था. तो तो मैंने कहा कि हाँ मतलब अपना ही कुछ करना है, बिजनेस ही करना है, तो अब अपन ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करेंगे. एंड दैट पॉइंट इन टाइम 2018 2019 और लॉट ऑफ दिस लाइक boho jewelry, this thing where people don't show their face on camera. It's just like they source jewelry and they sell it through Instagram, kind of a thing. Like you have a selling page on Instagram. That's what I started. कुछ सरोजिनी से एक्सपायर वगैरह इंस्पायर्ड No, हुआ था क्या? not Sarojini. So I found a vendor in Jaipur, and I like अच्छा. it was really nice. It was fashion jewelry, not like precious metals, but it was like very nice, good designs, that kind of stuff. And I was doing like all of these photo shoots on Instagram. So pen ke dikha ke wow, हाँ. oh my God. So then I think I did that for 2 months. And in that 2 months, even though log were interested, like people are interested, क्योंकि तुम्हें सस्ती ज्वेलरी मिल रही है इंस्टाग्राम से, तुम क्यों नहीं खरीदोगे टाइप्स, right? The thing was that you have to do everything yourself. Okay, हाँ. so everything yourself, from sourcing to shooting to packaging to uh, customer service to going and deliver, like एग्जैक्टली. setting it out for delivery. And I'm like, भाई ये तो बहुत ज्यादा काम है, इतना काम तो like there are much easier ways to make money. Why am I doing this? So I still have stock from that venture, by the way, So lying with me. So are if we anybody announcing watching this any? Yeah. podcast, if you want jewelry, I have it. You Yes. can DM me on Instagram and I will show you the designs. Use coupon code glitters of life, get 10% Yes. discount. Yes. So I did that for 2 months and then I just quit cold turkey. I was like, no, this is not happening. And then after that, because then the lockdown thing happened. So for like the next 6 months, I was just struggling to make money because bhaiya, because there's no work. And I stupidly quit this job also, and then I closed my brand also. And I was like, "Ki Aditi, क्या कर रही हो तुम जीवन में?" But स्टारबक्स yeah, में जाके eventually कॉफी, works out. फिर मैक नहीं का फोटो. नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा था, बाहर कहाँ निकल रहे थे घर से. हाँ, 2020 की लॉकडाउन बात हो में. रही है ये. हाँ. It was like you're stuck in your house, there is no work, you are not getting paid. पेड. It was a very stressful time, honestly. Now I am नहीं laughing तो about होता it. है. या नहीं, बिजनेसेस के साथ वैसे ही था ना. लाइक इफ Oh my हुआ God, the है. number of businesses that have shut shop बहुत in है. 2020. बहुत, that was really sad. या True. बहुत ही मुश्किल था. सो Hmm. एज यू सेड लाइक कि हमेशा वो काम दिमाग में होता है तुम्हारे. सो Hmm. व्हाट्स योर थ्योरी? लाइक वर्क टू लिव और लिव टू वर्क. और फिर एक पॉइंट के टाइम ना वो कहते हैं ना कि बेटर लाइफ क्रिएट करने का एक अनहेल्दी ऑब्सेशन हो जाता है. सो Better life in the sense? लाइक कि यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव Quality of योर life or क्वालिटी ऑफ लाइफ. नहीं नहीं, mentally क्वालिटी improve ऑफ yourself? लाइफ. मेंटली Okay, तो हाँ. हम स्ट्रांग होते ही है, बट देन क्वालिटी Hmm. ऑफ लाइफ की सारी चीजें वैसी है, दिखनी भी अच्छी चाहिए लोगों को. तो वो टाइप को इम्प्रूव करने के लिए फिर वो कभी कभी अनहेल्दी ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है. देखो मैं मतलब मैं डिनाई नहीं करती हूँ ये चीज कि मैं बहुत ही वर्कहॉलिक इंसान हूँ. But I like my workaholicism. That is not a word, but still we'll roll with it. Again, like I genuinely enjoy doing the work because I don't know, like a lot of people say no कि अच्छा इतने 26 साल में रिटायर हो जाओ फिर ये करोगे. मैं like I've thought about it कि
अगर मैं 30 साल तक रिटायर हो जाती फॉर इंस्टेंस, तो मैं क्या करती अपने टाइम के साथ? लगता है वैसे होता नहीं है। हाँ, लाइक it's a lot of fun to work towards something, right? And I think in general in life at different stages you have different obsessions, so like like your obsessions transform. But if you don't have an obsession, and not speaking about this in an unhealthy way where या you गेट इट। stop taking care of your health also and you stop taking care of everything else and you're just one, like a crazy person going after one thing, but more in the sense of having like a passion, right? Our passions evolve, and if we don't have a passion or if we don't have something to look forward to, तो फिर बड़ी बोरिंग हो जाएगी यार लाइफ। तो ऐसे तो नहीं है, like my love for my work, I think, is just fuels all of the other aspects of my life. So when I'm fulfilled in my work, it also shows everywhere else, like in my health, in my mental health. I've always also been that person ki jo सिर्फ एक काम कर रही हूँ अगर मैं जीवन में। And that one thing could be anything, like not work related also. If there's only one thing to do, I'm going to procrastinate the shit out of it and it's not going to get done. But if I have 10 things to do, I will do all of them and ऑल ऑफ all देम। of them will happen on time. So I think that is there. And in terms of quality of life, as a creator, I think there is a pressure on people to show things a certain way, have a certain kind of a गेट इट। aesthetic. Also, I'm a visual arts person. I was an artist. Like I still am. I started painting at the age of 5, and I love visual stuff. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे चीजों को सुंदर रखना, से सुंदर मतलब even if I shoot my videos, I want the frame to be perfect and looking nice. राइट, And it's आई not कैन सी दैट। for the audience. Like, yes, it impacts your content in some way, I'm sure, but it didn't start out as a means to impress an audience. It started out because मुझे नहीं तसल्ली हो रही ना, ऐसे अगर वो नहीं नीट एंड क्लीन दिख रहा है या वो ऐसे गंदा पीछे में ऐसे मेरे फ्रेम में अगर कुछ गंदगी पड़ी है, तो I'm like, when I watch the video I'll be like, अरे यार अदिति. So it's वही not है। it's not so much for showing other people, but it's like it's just something that's inherently there. And my mom also has it, so I guess it's passed down, that kind of thing. अमेजिंग अदिति, मतलब मेरे को ना ये कन्वर्सेशन से काफी रिलेटेबिलिटी आ रही है, एंड आई फील दैट आई हैव मेड अ Hmm. ग्रेट फ्रेंड आउट हियर थ्रू दिस कन्वर्सेशन बाय नोइंग Yay. यू, बिकॉज देन मेरे लिए वो अप्रोच नहीं है कि कितने फॉलोअर्स है कौन से प्लेटफॉर्म पे, व्हाट। हाँ, true. फॉर मी इट्स मोर अबाउट के ग्राउंड वर्क। सो आई हैव होस्टेड पीपल हु आर Hmm. लाइक हैविंग नो सोशल मीडिया प्रेजेंस एज वेल। तो मेरे लिए वो है, आई एम Hmm. नॉट इवन चेजिंग। मेरे को लोग बोलते हैं कि नहीं, तू थोड़े दिन बाद वो चेज करेगा, देखो वो बड़े बड़े लोग चाहिए रहेंगे वगैरह टू जस्ट ग्रो एज अ पर्सन, बट फॉर मी इट Hmm. स्टिल्स लाइक, हाँ ये कन्वर्सेशंस चाहिए मुझे। फॉर मी इट कनेक्ट्स मोर, फॉर I माय know what you ऑडियंस ऑल्सो mean. इट कनेक्ट्स मोर। I know. या तो वो Yeah, I know what you वही है mean. मतलब मेरे लिए, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स मी टू ग्रो एज अ पर्सन। ये जितने भी इंसाइट्स मैं अभी सुन रहा होता हूँ ना, वही मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ एट द टाइम See, ऑफ एडिटिंग यही एज है वेल। वो। यही तो तुमको वो सेल्फ हेल्प, जो देखो असली सेल्फ हेल्प यही हो रहा है, जहाँ पे या where you are listening to something and you're taking knowledge from it, right? All your audience should like राइट, understand this is the pivot of the conversation where your knowledge can come from anywhere. Self help is what? Like it's helping yourself. The source एग्जैक्टली। can be anything. Even हाँ, in therapy, even with coaching, you have to do the work ना. Like तुम्हें या बता ही या सकता है कोई कि क्या करना है. They can't come and do it for you. So you are already doing एग्जैक्टली, it. This should be a वही होता है। knowledge snippet या if you do like those clips of your podcast. हाँ, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट। नहीं, वो ज़रूरी Yes. है। टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन कैन इवॉल्व एज अ ह्यूमन। वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, वो क्वेस्ट होती है, एंड एवरीवन ट्राइज देयर ओन बेस्ट। हम फोर्स नहीं कर सकते कि यार तुमने True. इसी डायरेक्शन में ऐसे ही करना चाहिए। फॉर ईच एंड एवरी पर्सन दैट विल डिफर। बट देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अदिति, व्हाट्स योर टेक ऑन मेंटल हेल्थ, बिकॉज देन वो उसको संभालना सारी चीज़ों के बारे में, एज वी आर टॉक्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके This दिमाग is में a फिट हो थोड़ा जाती है। open-ended question. Take on what as like what direction, what aspect of mental health?
It could be anything that connects most with your life. I haven't like generalize, मतलब मैंने इसको generalized इसलिए किया है क्योंकि people as a whole will be able to understand it better कि तुम्हारा approach क्या है. But if you want to just narrow it down, you can totally go for it. No, what I was trying, what like, do you want to know more about how I take care of my mental health? Is that the question? हाँ Or मतलब is it like how the mental health industry is shaping up? That no, sense of like thing. how do you take care of your mental health? Because then जो भी wellness है, जो भी self growth का phase होता है तुम्हारे लिए, so what role does Hmm. it play into your life? Yeah, I think now it's a very automatic process. Like it's not Okay. something that I go out of my way to do. Like everything that I talk about in my videos is stuff that I've already implemented in my life. I try and make it a point that I don't talk about things that I haven't personally experienced either with myself or with the people around me, because then तो किताबी ज्ञान ही है ना वो सब कुछ तो हाँ, whatever I've got it. spoken about, let's say journaling for instance, right, it's a very normalized part of my life. अगर मुझे कुछ भी, like writing has always been a part of my life, and then in 2020 I realized how important, like how beneficial just putting out your thoughts on paper can be. And I think since then it has just been a very regular part of life. Like this is one thing that you could say I do for my mental health. Or Yeah, then there's praying. Like there's one mala jap that I do at night before sleeping, so that keeps you grounded, keeps you believing like in something other than just your human self, which I think is a very insignificant part of creation anyways. We're like this tiny speck on the universe ka spectrum. And what else? Working out. Working out is huge. Working out is very important, huge. not just for your physical health. Mental health ke liye, Mental I health. think the biggest thing that you can do is work on your fitness and the food that you eat. And I read up about the gut health thing. So the gut is actually called your second brain. Yeah. And the reason for that is that ever since like human evolution has been going on, the gut has also been constantly evolving. Like those are the two nervous processes, your brain and your gut, because of whatever you're eating, understanding what is right for your body, what is not right for your body, etc. So it's always been linked to your brain. And you like the listeners and the viewers can also do this experiment if they want. I started tracking my food for a little bit. This is a couple of years ago, I think. And why I did that was to understand how what I ate impacted my mood, or how it impacted हाँ. how I was thinking, how I was feeling, right? So, on days that I ate junk food, for example, or on days when I did not eat like a good meal, that is good, healthy, balanced meal, यार थॉट्स भी वैसे ही हो जाते हैं. Like you are cribbier होते than हैं. usual, you have bigger mood swings and things like that. And then I realized कि अच्छा Hmm. बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी. So yes, food, and like if people fix their fitness and their food, बहुत सारी problems वहीं से solve हो जाएंगी. And yeah, then after that I think the third step of this would be journaling or writing or penning down your thoughts. If you can't write, then audio notes on your phone, like कुछ भी सोच रहे हो Great. तो audio note में बोल लो. नहीं, बढ़िया है ये Yeah. सारी चीज़ें. सो whoever listening, whoever watching us, ये जो सारे टिप्स होते हैं इसको फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली यू फील द काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन इनटू योर लाइफ की जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने लगता है. So that is more feasible kind of option that one can have. And Aditi, if you have to talk about the last part, which could be about the vulnerability, वो कैसे देखती हो तुम into your life? Because then वो एक कहीं ना कहीं बैरियर हो सकता है इनटू योर सेल्फ ग्रोथ जर्नी, इनटू योर पर्सनल डेवलपमेंट. तो इन व्हाट वे यू कैरी फॉरवर्ड योर लाइफ बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि वल्नरेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को हैम्पर नहीं हम्म. करना चाहिए. यार वल्नरेबिलिटी ना ऐसी चीज है कि ज्यादा वल्नरेबल हो तो वो भी ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, और एकदम ही वल्नरेबल ना हो इंसान तो वो भी ग्रोथ को हैम्पर कर सकता कंफर्ट है. जोन टाइप हो सकता है. हाँ. uh, हाँ. So I in the past I have struggled with being vulnerable, because
I like to be a very self-sufficient person. ऐसे कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, और आना भी चाहिए, मतलब ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें एज एन अडल्ट बिल्कुल, तुम्हें खुद की बिल्कुल। चीजें खुद नहीं हैंडल करनी आनी चाहिए. But I think 2020 again, like the lockdown, made us all realize a lot of things. It's also when I A lot of them. realized the importance of asking for help, or of relying on a community, or of relying on your friends, or on your, like if you have a partner, then on your partner, or if you have your family, then on your family. कि वो कितना important है, और वो कितना important role play करता है, not just in your growth but in your overall well-being. Yeah, Like a lot of the self-help advice that we see today, and initially I think I used to resonate with that, is very centered around the individual, right? Ki it's individualistic in nature, ki I, me, myself wala concept hai, ki think about yourself and take care of yourself. And what I've realized is doing that is not possible without other people, because essentially the concept of self is something that exists in relation to other people, to society, to those who are around you. If nothing else exists, then the concept of self also doesn't exist, right? And which is why, like, vulnerability here becomes important, because if you're completely closed off from everything, from everyone, you are also blocking away the good things. You're not letting the good things in life. Like a lot of us build these shields, these walls around us to prevent like bad stuff from, let's say, bad thoughts or negative हाँ, people or negative entities from coming into our lives. लेकिन आप जब ब्लॉक करते हो तो सब कुछ ही ब्लॉक हो जाता है. Like you're also, because then you become skeptical, then you become very cautious of who you are dealing with, and that also prevents a lot of good from coming into your life. So again, like there has to be a balance to be struck with vulnerability. कि हाँ, very true. कुछ कुछ scenarios में you know that here inherently being vulnerable is not going to work. Let's say a professional space, for instance, right? But in relationships, with in interpersonal relationships, so you have to open yourself up to the hurt as well. क्योंकि like Get it. it's like two sides of the same coin. अगर अच्छी चीज है तो बुरी भी है ही. And वो that fundamental understanding actually helps you stay a little bit detached from the outcome. So even if something hurtful is happening, it helps you stay a little bit saner, I would say. So yeah, my बढ़िया take है. on vulnerability would be that. नहीं, your takes are bang on target. I would say bull's eye. नहीं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है because then you have lived it, you have experienced it, and then sharing on to for the audience always means a lot because then काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो समझ ही नहीं पाते कि हमें किस तरह की हेल्प चाहिए है, किस तरह से इसको डील करना है, एंड दिस हाँ, काइंड ऑफ किस कन्वर्सेशंस रियली तरीके से हेल्प. डील. हाँ, इट मेक्स देम कंफर्टेबल, देन वो सोच सकते हैं. So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ बिफोर I wrapping up had this, a, oh sorry, yeah, हाँ, go ahead. continue. No, we are not wrapping. You had to say something. No, I just, this thing that I like, seeking out help wala cheese that you were saying, no, I realized when a client actually reached out through Instagram, क्योंकि content देख रहे थे तो they become familiar with the kind of person that you are, right? And they reached out and Yeah, they really wanted help regarding a mental health issue only. कि stuck in a rut वाला चीज हो रहा था, कि मतलब करना चाह रहा है वो इंसान बहुत कुछ and नहीं कर पा रहा है. नहीं पा And रहे you हैं. know what helped? What helped? Guess what helped? Guess. Watched What could any have of helped? your next video या फिर कुछ? No. I was like कि I just asked this person their routine, कि क्या है, दिनचर्या कैसी है सर आपकी. And बिल्कुल जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, वर्कआउट, एक हाँ, हेल्दी ईटिंग और वो सब बिल्कुल मिसिंग राइट. था. तो हमारे यही डिस्कशन हुआ कि फॉर अ मंथ you have to try just three things, which is to go out for like a 30-minute walk every day. So you, ideally in the morning, so that you get your sunshine and you are also getting physical activity in. You have to have salad before your meals, which is just like kacha salad. And you journal, write down one page before you go to bed every day. Bro, that person came back to me and he's like, ki
this shit works. And I was like, yes, it does. It works. It works. It's like very basic advice, but a lot of the times in life, हम बस basics ही नहीं कर रहे होते, सब कुछ और try कर लेते हैं. And as a हाँ, result, we वो तो feel कि results नहीं आ रहे हैं. And I was like, फैंटास्टिक। yeah, मतलब कुछ इससे चीज़ें काफ़ी सिंपल good. रखनी चाहिए होती है, सिंपल को तुम वो बेसिक को ज़रूरी अगर है। हम सॉर्ट कर लेंगे, वो जो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी आपने? नहीं, ठीक है, नहीं है, मतलब ऐसा आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज इट्स अ नहीं। वेरी वैसे पॉपुलर हो गई ना बुक, या तो हर या किसी ने या वैसे पढ़ ली होती है, तो फ़ोर्सफुली एटॉमिक भी पढ़ते हैबिट्स लोग। में हाँ बच्चे चलो ठीक है, कोई पढ़ तो रहा है, देखिए जरा नहीं, दैट इज़ एटॉमिक फाइन। हैबिट्स में यार that person talks about the most fundamental things about habits. James Clear is like कि या XYZ ऐसे habit काम करती है, इसको ऐसे बनाओ. It is the basics, like it's the basics of habit building, and that makes, which is why that book I think is so popular also. कि if you sort एग्ज़ैक्टली। out the basics, if you know XYZ ऐसे करना है और तुम वो कर लो, the just being कर लो, half of your problems go away. They really do. या नहीं, वो काम करता So है डेफ़िनेटली। it's all boils down to basic level stuff. यप, वो कहते हैं ना कि अगर कुछ सीखना है तो लाइक स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स, यू गेट लाइक कॉलेजेस की NCERT से बुक्स होते start हैं उससे करो सीखना अगर है। लाइफ भी वहां से ही शुरू होती है। True, बिल्कुल बहुत सही बात. This यप। should be another clip for your podcast. ओके, अभी करते हैं रैप, बट उसके पहले कुछ थोड़ा एक रैपिड फायर खेल लेते हैं। Oh, nice. Okay. रेडी फॉर इट? Okay. I don't know what kind of questions to expect, so I नहीं guess नहीं, yes. काफी सिंपल है। Okay, okay. नहीं ऐसे कुछ नथिंग लाइक दैट कि आपके ऊपर कुछ कहते ना कि हाँ धब्बा आएगा टाइप्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है. Okay, okay. Ready, ओके, ready. सो what is the most funniest or the unusual piece of self-help advice that you have got? यार ये रैपिड फायर की क्वेश्चन नहीं है, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए एक, मुझे. नहीं नहीं, एक कुछ तो होगा ऐसे। The funniest piece of self-help advice that I've ever gotten. Damn. I don't remember. Like I can't, when I'm on the spot, I can't recall is the problem. Ask me simpler ठीक questions. है। चलो, फेवरेट जंक फूड? Favorite junk food ramen. आज मैगी डिनर में का वही साथ प्लान छोटा भाई, बड़ा भाई. या यार whatever you call हाँ it? यस ट्रू, यही प्लान है आज. इतनी जंक Okay, फूड की बातें what do करेंगे you और feel वही like? खाने वाली हूँ अब मैं. Are women complicated? Yeah, women and men both are actually, but like since you've asked me about women, then yes, humans are Okay, complicated. okay, humans are complicated. We all are, right? Yeah. Chalo, I am also answering from on behalf of you as well, and my Mm, individual answer to it. Like, yes. uh, have you ever stolen something? I I think I have. I'm just trying to recall what it was. किसी का दिल की बात No, नहीं no, I करना। haven't. No, no, I haven't stolen something. I have just been mean to kids. I was trying to remember what the story was, and then I realized no, I was not stealing something. I was just taking badlav from a kid who was traveling. Yeah. क्या ले लिया उसका? Have I stolen something? नहीं, कुछ लिया नहीं यार उसका एक्चुअली. मतलब ऐसे एक बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा था जब मैं तब की बात है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी. अच्छा, काफी पुराना है। तो हाँ, काफ़ी पुराना है. तो दिस किड वुड लाइक, इट वाज़ अ बर्थडे पार्टी, दिस किड जस्ट वुडन्ट स्टॉप. वो नहीं आता था पहले स्प्रे में, स्प्रे हाँ, कैन में स्नो आता था. या वो या मेरे को या बहुत इरिटेट किया उसने ना, तो मैं बाय द एंड ऑफ द पार्टी आई वाज़ एक्सट्रीमली पिस्ड ऑफ. सो आई वाज़ लाइक कि नहीं, बदला तो लेना पड़ेगा. तो हमें जो डेज़र्ट में खीर मिली, उसकी खीर मैंने मिट्टी में ला दी.
I was like, yes, you deserve this, kid. And then कौन है वो महान as a kid, इंसान? लाइक ये my वही brain चेहरा was है. like, my brain was like, yo, my God, मैंने मिट्टी मिला दी, उसमें कुछ था तो नहीं, वो बच्चा मर तो नहीं जाएगा. And I couldn't sleep at night, okay, that night, because I was shit scared that if something happens to the kid, cops will come to my doorstep and were like, यही बच्चे, उसके fingerprints मिल गए उसके ऊपर. But yeah, that was the random ass story that I was remembering. No, I haven't. I haven't stolen anything. कैन वी सेल दिस कंटेंट टू एबीपी माजा और वो कौन सा है ना एबीपी न्यूज वगैरह सनसनी के लिए. Sure. If I will need a part of the profits if we do decide हाँ to sell this. ऑब्वियसली इट्स योर But yes. कंटेंट योर स्टोरी बट देन प्लेटफॉर्म. ओके Yeah, we वी आर can. चलो ठीक है. एक क्वेश्चन तो मैंने आंसर ही नहीं करा. ठीक है उसके लिए मेरे पास रिप्लेसमेंट के लिए है नहीं कुछ. द कंट्री दैट यू वांट टू ट्रैवल. I actually really want to go to Italy and Japan. मतलब next 2 destinations that I want to go to are Italy and Japan. How often do you Italy travel? तो भाई at one point in time I was doing it like very regularly, once a month kind of a thing. But फिर वो हो गया. अब like twice, thrice a year types. Good. Like similar way. I love to travel. अभी चल रहा है देखते थोड़े बहुत खर्चे निकाल के करते हैं प्लान कुछ. Yeah, I know what you mean. Yep. इटली जाके तो मुझे पिज्जा खाना है. अच्छा ये क्या हुआ? वाला पार्ट बहुत बार आया है काफी अच्छा लगा है. It is something. अभी फिर से हो रहा था. मैं इसे कर रही थी. मैंने कहा हाँ. I think वो इसे मेरा default setting है. I'm refraining from doing it. Okay. Yes. That is a part of who I am. Definitely. So, if anyone wants to reach out to Aditi, this has been a fantastic episode, Aditi. I'm really super proud, as I said had a before. lot of fun. Definitely, मतलब कि ये conversation format में मजा ही अलग है because then I get to explore a lot of ways कि what people are doing, how they are doing it. So again, thank you so much for giving me this kind of opportunity. Loved the entire conversation. I hope Absolutely. people Thank you for inviting me. Thank you for having me here. Yep, definitely. And if people love this kind of episode, we'll plan something more on a very niche oriented topics. So thank you and take care. Stay happy, stay healthy. Bye bye. Take care. You too. Thanks. Bye bye.